जिसमें सियाल, मोहरा, मेर, चिकबड़ाई और यदि देखा जाए तो हम लोग चमार बोलते हैं, चंबार भी है। इस सबको भी उसमें शामिल करने के लिए रिकमेंडेशन दिया गया था। सारे भारतवर्ष में 80% में 17% है, मगर शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट और निर्वाचित के लिए बस 15% उनका रिजर्वेशन मिल रहा है। जब 17% है तो 17% मिलना चाहिए। मैं और एक बात बोलूंगी, ये कुछ दिन पहले 7 तारीख को जन्म और मृत्यु का, एक मिनट मैडम, जन्म और मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन का जो बिल पारित हुआ, ये इन लोगों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि ये लोग जन्म के कारण वो लोग रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पाते, आगे चल के पढ़ाई में उनको तकलीफ होता था। उन लोगों के बच्चों के लिए बहुत अच्छा। और एक ही बात है, मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये बात मतलब आंदोलित करता है, अचंभित करता है कि हम लोग जब अनुसूचित जाति के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं, आज जब से व्यवस्था हुई है सुप्रीम कोर्ट की, आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 5 विचारपति है जो अनुसूचित जाति के, और देखा जाए सारा भारतवर्ष में 850 जो विचारपति है हाई कोर्ट में, उनमें से बस 24 है। इनको यदि हम देखें कि इनको प्रमोट कैसे किया जाए, उनके लिए भी व्यवधान होना चाहिए। मैं फिर से ये बिल को समर्थन करती हूँ। थैंक यू सो मच। वंदे उत्कल जननी। थैंक यू। ऑनरेबल डॉक्टर सुमर सिंह सोलंकी, 3 मिनट्स। धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, नर्मदे हर में माननीय उपसभापति महोदय, मैं संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। और इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में संशोधन करके किया गया है। इस सूची में महार और मेहरा को शामिल करने का प्रस्ताव है। इन जातियों को संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 के भाग 23 छत्तीसगढ़ में प्रविष्ट 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। माननीय उपसभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि जब भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विषय आता है, जब भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विषय या बिल आता है और जो आदिवासियों के और अनुसूचित जाति के भाइयों के हितैषी होने का ढोंग करते थे, वे आज सदन से बाहर चले गए हैं। वे जब भी आदिवासियों के हित की बात आती है तो सदन में चर्चा से भाग जाते हैं। माननीय उपसभापति महोदया, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बिल 2000 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसी मानसून सत्र में यह बिल लोकसभा द्वारा पारित भी किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार खटीक जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि देश के कोने कोने में इस प्रकार से पिछड़ी और छोटी जातियां जो अभी तक मुख्य धारा से वंचित थे, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के हमारे गरीब भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ऐसे समय में विपक्ष, जिन्होंने 60 साल तक आदिवासियों का, अनुसूचित जनजातियों का, अनुसूचित जातियों की भलाई का ढोंग करते आए हैं, उन्होंने सिर्फ 60 साल तक राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। और वो हम सदन के लोग और देश की 140 करोड़ जनता देख रही है कि वो आज सदन से फिर भाग गए हैं और पिछले लंबे समय से विपक्ष हमारा सदन में उपस्थित नहीं है। और जब जब आदिवासियों का और अनुसूचित जातियों के भाइयों और बहनों के कल्याण की बात आती है सदन में, तब वो अपने क्षेत्र के होते हुए भी आज छत्तीसगढ़ के सांसद भी यहाँ पर सदन में उपस्थित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के भाइयों और बहनों के हित की चिंता कांग्रेस को नहीं है, चिंता हमारे विपक्ष को नहीं है। मैं आज माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष को बताना चाहता हूं कि आपकी सरकारों ने
पिछले 60 सालों में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज को केवल वोट बैंक समझ रखा है, जिससे कभी इस समाज के विकास की चिंता नहीं की। ये हमेशा मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम करते हैं, ढोंग करते हैं। विपक्ष को बोलने का हक भी नहीं है। जो कुछ भी दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। हमारे जनजातीय भाइयों का कल्याण करने का काम किया है, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का कल्याण करने का काम किया है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों को आरक्षण देने का काम किया है। इस माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में संत रविदास महाराज का 100 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग बाबा साहब की बात करते हैं, विपक्ष के लोग बाबा साहब की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप अनुसूचित जातियों के भाइयों के हित के जब बिल आता है सदन में, तब आप सदन से भाग जाते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे देश की सरकारों ने अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। और अंत में अपनी बात कहना चाहता हूं कि रेत पर हम नाम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पर नाम टिकते नहीं, सभापति महोदया, रेत पर नाम हम लिखते नहीं क्योंकि रेत पर नाम टिकते नहीं। पुनः सुन लो विपक्ष वालों, पत्थर दिल हम, जो नाम सीने पर लिखते हैं वो कभी मिटते नहीं है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, जो छत्तीसगढ़ के मेरे अनुसूचित जाति के भाई और बहनों के जिंदगी बदलने का काम करता हूं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को और हमारी सरकार को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन लाखों भाइयों और बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नर्मदे हर। Thank you. Honorable Sri Kanakamedala Ravindra Kumar. Yes. Thank you, Vice Chairman, Madam, for giving this opportunity. This bill includes a particular group in the SC category, but the question is, without there being any infrastructure, mere giving ST status is a little use, because they are living in very pathetic condition in the society. Employment comes after that. Without creating any infrastructure, mere giving the SC status is also no use. They are facing so many troubles, and the government is not providing in infrastructure and medical facilities. They have to be provided by the respective state governments, since it is a state subject. It is the state government. Another major issue is we have to protect the lands of the STs, and we have to protect the safeguard the interest of their standards of living. Some of the lands belonging to the SCs are being occupied, and also by amending the existing acts, and they are taking away the lands of the SCs in the state of Andhra Pradesh. Now it is coming to the employment comes under after that. Without, sir, I will give an example in the state of Andhra Pradesh. My senior colleague has already mentioned about the scheme being implemented in the present government, but unfortunately the situation in the pathetic condition. Another major issue is we have to, sir, there is an act to protect the SC's lands, but the state government choose not to implement the act. The reason behind it is the officers on hands in regularity. Sir, it is the subject with regard to the state of Andhra Pradesh. Another important aspect that the central government has allocated certain funds to the SC/ST sub-plan. The state government has been given to other states. That funds have totally diverted by the Andhra Pradesh government for the purpose and utilizing and diverting the funds.
In order to substantiate these contentions, the member of National Commission for Scheduled Tribes, Mr. K. Ramulu, visited the state of Andhra Pradesh and found that there were a diversion of funds in the state government from SC plan. So there are some other important issues. Under the ST sub-plan, the government allocated certain funds from 2019 to 2021. Social welfare fund to the extent of 8,400 crores were diverted by the state government for other purposes by issuing GOs, memos, contrary to the rules made by the central government. Likewise, tribal welfare also. Funds to the extent of 1,000 crores were diverted by the government. Now, one minute, half minute. Likewise, now the state government brought the amendment to the SC lands, and they wanted to take away the lands by the ruling party authorities, and they are occupying the lands under the respective amendments. And apart from that, there is no law and order. Even day in and day out, atrocities and attacks on SC women and also SC doctors. Some of the false cases also foisted against the SC cases. This has to be protected. Mere giving SC status is not sufficient. The central government has to take care of and protect the interest of the SCs, particularly in Andhra Pradesh. Thank you. Please conclude. Please. Honorable Sri Subhash Chandra Bose Pillai. Reorganization, sir. By April, even that floor member also is going away, madam. There will not be any representation in the house. That's why he's speaking last, no? Last speech. Last speech. Respected Madam, thank you very much for giving the opportunity to speak on this bill, Madam. The object of this bill is to modify the existing list of scheduled castes in Chhattisgarh by including certain communities, unprivileged communities, but Mahara, Meher, Mehra communities. They are all including communities, to be including communities. The proposal has received unanimous concurrence from Registrar General of India and National Commission of Scheduled Castes. The Mahar community are the original inhabitants of Maharashtra, and the state is believed to be named after them. Dr. B.R. Ambedkar, the father of the Indian Constitution, also belonged to the Mahar community. Since time immemorial, the Mahar community has faced harsh discrimination from the upper castes. After 1949, when the Constitution outlawed caste discrimination, they began to fight for their rights under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. Ma'am, the positives of this bill is, one, the inclusion of these communities in the scheduled castes list will unlock multitude opportunities for them across various domains. Education. By granting them reservations in educational institutions, the bill can pave the way for increased literacy and access to better educational facilities, empowering the younger generation with brighter prospects. Employment. Reservation grant in government jobs and public sector enterprises will enhance their employability. Madam, the annual budget shows is a commitment and economic empowerment of weaker sections of society by allocating 38,006 crores, 60 crores for the BC component and 20,000 crores for the SC component and 6,929 crores for the ST component in this current year. I urge the government to fulfill its commitment to the well-being of the sections to ensure that the allocated funds are effectively utilized to create opportunities for their socio-economic growth and development. The Andhra Pradesh government sub-plan approach has had a tremendous impact on the uplift of the marginalized communities.
in its budget, the Andhra Pradesh selected 4,360 crores towards Andhra Pradesh scheduled caste corporations. Please Besides conclude. education and economic empowerment, there is a need to promote diversity and representation in the judiciary. It is shocking that since the establishment of the Supreme Court, there have been only 5 judges from scheduled caste. There are only 5 judges from the scheduled caste. Currently, only 24 out of 850 High Court judges hail from scheduled caste community. 14 Please conclude. 14 of these courts have no SC judge at all. This is very, very pretty. The government must implement policies to increase the inclusion of qualified and deserving candidates from SC backgrounds in the judicial system. Scholarships and training programs are needed to enhance the access and opportunities, ensuring a fair and inclusive Please judiciary conclude. that reflects the diversity of our nation. Honorable M. Tambidurai. I am concluding, Madam. This amendment further strengthens the unity in diversity, where every citizen is treated with dignity and respect, irrespective of their background. With these sessions, on behalf of the YSR Congress Party, I support this bill. Thank you. Thank you. Thank you, Vice Chairman, Madam. On behalf of ADMK Party, I am supporting the bill brought to make the amendment, the Constitution, to include certain communities as scheduled caste in state of Chhattisgarh. Madam, I have always, our party, ADMK Party, is for the champion for the reservation for the SC people and ST people and also OBC, MBC. Our dividend party is based and always fighting for the social justice of the for the poor people. The caste must be abolished. That is our main goal. In Tamil Nadu, in spite of that, our Honorable former Chief Minister MGR, founder of the ADMK Party, made the reservation for SC, ST, and MBC and BC. 69% he made the provision. Then afterwards, former Chief Minister, Madam Jayalalitha ji, she made that 69% as a constitutional provision, including in the parliament in the 9th schedule. That is, she succeeded in that. Madam, and one more request I am making, the Boyer community. This is the community, Boyer is one of caste. In Karnataka, the Boyer community is SC community, belongs to the SC community. But neighboring state, my Tamil Nadu, if you take my place is Hosur Krishnagiri area, it's only a few kilometers away from Bangalore. That community here called OBC. Therefore, this Boyer community is a very poor people working very hard, stone cutting and everything, construction activities, they involved. Therefore, our ADMK party is demanding to include this Boyer community in the list of SC community. This is a major thing, madam, because social justice can be given based on the caste system in India. We unfortunately, in India, our Hindu system, caste is prevalent in that. Because of the caste, the people are treated different way. Therefore, social justice we cannot get unless we give the reservation and uplift them not to economically and other getting employment. Therefore, this is the madam I am requesting through Honorable Minister to give social justice, which our Edappadi Palaniswamy is heading our party. He is always fighting for this kind of social justice based on Dravidian movement. And based on that, on behalf of Edappadi Palaniswamy and ADMK party, I request Honorable Minister to include this Boyer community, stone cutting people, labor people, poor people, when they are treated in Karnataka as SC, that must be, this community must be included in Tamil Nadu as SC community. This is my humble request. I hope that Minister will consider and do that, including these people. Thank you very much. Thank you.
Honorable Sri B. Vijayasai Reddy. Madam, on behalf of my party, YSR Congress Party, and it's not Congress Party, YSR Congress Party, madam. Please take note of that, madam. Not part of so-called INDA also. Sir, madam, I support on behalf of my party, YSR Congress Party, and also my leader, YS Jagannath Reddy Garu, who is considered to be a savior of SC, ST, BC communities. Support this bill, madam, wholeheartedly. Now, instead of talking on the bill, I have no other option but to counter the allegations that have been made by my opponent, member Ravindra Kumarji. That's only 2 minutes, madam. Recognizing the need for the Only holistic... 3 minutes. 2 minutes, madam. Recognizing the need for holistic upliftment of SC and ST communities in the state, Andhra Pradesh government under the stewardship of YS Jagannath Reddy Garu has taken wide range of initiatives, madam. And the point number 1, YSR pension kanuka. There are so many welfare schemes that have been introduced for the upliftment of SCs. YSR, first one, YSR pension kanuka, 2,600 crores released to 12 lakh ST pensioners. Madam, point number 2, YSR Cheyuta, 1,200 rupees, 1,200 released to 6.4 lakh SC women to help them develop entrepreneurship skills, madam. Number 3, Jagananna Vidya Divena, 340 crore incurred towards reimbursement of fee for 2.3 lakh SC students. Next, point number D, AP government has introduced a new scheme, Jagananna Videshi Vidya Divena, to provide financial assistance to eligible students belonging to SC, ST, BC, minority, EBC to pursue higher studies in top 200 universities as per the QS World University rankings, madam. Madam, last point, the free power to 200 units, up to 200 units is provided to 17 lakh SC households every month. But the state efforts must be supplemented by the Honorable Minister from the Union government. I request the Union Minister to supplement all the schemes and support the state in upliftment of SC, ST, BC minority communities, madam. Thank you very much. Thank you for the Thank you. Support the bill wholeheartedly. Honorable Dr. Virendra Kumar to reply the discussion. धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। Not possible. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जातियों में मेहरा और माहिरा समुदाय को शामिल करने के संबंध में सदन में इस चर्चा में भाग लेने वाले हमारे सभी माननीय सदस्यगण, सुलता देव जी, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, कनक मेंढा रविंद्र कुमार जी, सुभाष चंद्र बोस जी, एम थंबीदुरई जी, विजय साई रेड्डी जी, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने समाज की सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के जो मेहरा माहिरा समुदाय के जो हमारे बंधु हैं, ये बिल जब लोकसभा से पारित होकर यहां पर आया, इस अवधि में छत्तीसगढ़ में समुदाय के बंधुओं के द्वारा लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा था। उनके द्वारा यह अपेक्षा की जा रही थी कि इसको राज्यसभा में शीघ्र सर्वानुमति से इसको पास कराया जाए, और जितने भी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, उनकी जो अभिव्यक्ति निकल के आई, जो प्रतिध्वनि निकल के आई, सभी की प्रतिध्वनि इस बिल के समर्थन में निकल के आई। हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे छत्तीसगढ़ के बंधुओं के समर्थन में निकल के आई। मैं फिर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समता, समानता और समरसता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय की अवधारणा का सोच है, इसको सही मायने में समाज के हमारे वर्ग के जो ऐसे बंधु हैं
उन बंधुओं के सामाजिक आर्थिक शैक्षिक उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, आवास के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछले 9 वर्षों में जो योजनाएं बनाई गई, उनको जमीनी धरातल पर उतारा गया, उसके परिणाम आज समाज में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के मन में एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। अभी हमारे डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी बोल रहे थे कि 60 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जिन लोगों ने राज किया, केवल दिवा स्वप्न दिखाने का काम किया, लेकिन सही मायने में उनके विकास के लिए जो योजनाएं बनना चाहिए थी, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो अवसर प्रदान किए जाने चाहिए थे, उस काम को आगे नहीं बढ़ाया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चाहे वो नमस्ते स्कीम हो, चाहे वो वेंचर कैपिटल फंड की बात हो, चाहे कौशल विकास की बात हो, इन सभी के माध्यम से जहां उनके जीवन में सुगमता लाने के लिए, स्वावलंबन लाने के लिए इन योजनाओं को आगे बढ़ाया गया, वहीं पंच तीर्थों का निर्माण करा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए जो पंच तीर्थ हैं, पहली बार किसी देश के पंतप्रधान ने हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो इंदौर में महू का उनकी जन्मस्थली हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय संग्रहालय हो, नागपुर की दीक्षा भूमि हो, मुंबई की चैत्य भूमि हो और लंदन की शिक्षा भूमि हो। इन पांचों स्थान पर जब अनुसूचित जाति वर्ग के बंधु जाते हैं, इन पंच तीर्थों का जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, बाबा साहब के जीवन का जब दर्शन का प्रत्यक्ष रूप से जब वो दर्शन करते हैं, तो तब उनको एहसास होता है कि 60 वर्ष तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे देश में जो समता, समानता, समरसता के संदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, सरकारों द्वारा डॉक्टर भीमराव जी को समाज के सामने जिस रूप में सामने लाया जाना चाहिए था, उसके प्रयास नहीं किए गए। उन प्रयासों को, परिणामों को सही मायने में समाज के सामने लाने का काम किसी के द्वारा किया गया, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और प्रधानमंत्री जी को सोच में जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन होते हैं, वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का भी दर्शन होते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। भारत के विकास की अगर हम बात करें तो चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों की बात हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की बात हो, देश में बनने वाले विश्वविद्यालयों की बात हो, कॉलेज की बात हो, IIT की बात हो, उद्योग धंधे और कारखानों की बनाने की बात हो, अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति, अनुसूचित जाति वर्ग का बंधु हर स्थान पर न जाता है। गगनचुंबी इमारतों को बनाने में हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो स्वयं जब राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाता है तो सड़क के किनारे वो अपनी टीन की छोटी सी झुग्गी बनाकर वो वहां पर रहते हैं, लेकिन हम और आपको जाने के लिए सनसनाती हुई सड़कें बनना चाहिए, चमचमाती हुई सड़कें बनना चाहिए, दमदमाते हुए गगनचुंबी इमारतें बनना चाहिए। इनको बनाने का काम अगर कोई करता है तो हमारा अनुसूचित जाति समाज का बंधु हमारा करता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10 में से 5वें स्थान पर पहुंची। इसमें हमारे अनुसूचित जाति समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज जीवन के हर क्षेत्र में, सड़क से लेकर सफाई से लेकर सुरक्षा तक, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वहां पर दिखाई देता है। उन्होंने अपने परिश्रम से, विश्वास से समाज में जो स्थान अर्जित किया, आज देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जब इन प्रयासों को आगे बढ़ाया गया तो आज अनुसूचित जाति वर्ग के मन में विश्वास का भाव पैदा हुआ कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन करने के लिए हमारे सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया। हमारे उड़ीसा की हमारी बहन सुलाता देव जी ने कहा कि उड़ीसा की सरकार के द्वारा वहां कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा की गई थी, लेकिन RGI के द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया और इस कारण से इसको निर्धारित प्रक्रियाओं के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया। हमारे वरिष्ठ सांसद लोकसभा में भी वर्षों हमारे साथ में रहे हैं, श्री M थंबीदुरई जी ने तमिलनाडु राज्य सरकार से, और उन्होंने बोयर जाति के संबंध में बताया कि कर्नाटक में वो अलग स्थिति है, तमिलनाडु में अलग स्थिति है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु राज्य सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं आया है और हमारे माननीय सांसद बहुत वरिष्ठ हैं। वायर कम्युनिटी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।
भारत सरकार ने किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई है। उसमें राज्य से संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव आता है। प्रस्ताव आने के बाद आरजीआई को जाता है। आरजीआई जब सहमत होता है तो कमीशन को जाता है। कमीशन से के बाद फिर मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पास जाता है और वहां से आने के बाद फिर सदन में बिल के रूप में लाया जाता है। तो तमिलनाडु से अगर इस तरह का कोई बिल आएगा तो आगे उस संबंध में ये सारी प्रक्रियाएं होने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। 1989 में अविभाजित मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश ने वहां पर माहरा को महार, मेहरा और मेहर के परिवार के रूप में समावेश करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश के द्वारा भेजा गया था और 1992 में आरजीआई ने अविभाजित मध्य प्रदेश में माहरा जाति को शामिल करने के लिए सहमति भी दी। 2000 में मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ, 2002 में माहरा को मध्य प्रदेश के अनुसूचित जातियों की श्रेणी में संविधान अनुसूचित जाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत महार, मेहरा, मेहर के पर्याय के रूप में शामिल किया गया। लेकिन कुछ कारणों से छत्तीसगढ़ ने वहां की जो अनुसूचित जातियों की सूची में तदनुरूप संशोधन नहीं किया गया क्योंकि उनके द्वारा उस समय प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के महार, मेहरा, मेहर के पर्याय के रूप में माहरा और मेहरा को शामिल करने का प्रस्ताव किया। मध्य प्रदेश में माहरा को अनुसूचित जाति श्रेणी में पहले ही शामिल कर लिया गया था तथा माहरा एवं मेहरा मामूली वर्तनी भिन्नता है, छोटी सी मात्रा की भिन्नता है और इसी कारण से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने दिनांक 3/6/2021 और 28/1/2022 के पत्रों के द्वारा अनुशंसा करके राज्य की महार, मेहरा और मेहर के साथ में क्रमांक 33 पर मेहरा और माहरा को पर्याय के रूप में शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव भेजा, जिसका आरजीआई ने और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने समर्थन किया। इस पर संबंधित मंत्रालयों के द्वारा भी और अनापत्ति दी गई और इसके उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से सदन में पहले लोकसभा में लाया गया, वहां पर सर्वसम्मति से पारित हुआ और आज भी सभी माननीय सदस्यों के द्वारा इसको समर्थन दिया गया है। जो हमारे मेहरा और माहरा के लगभग 2 लाख की आबादी है, ये हम पर छत्तीसगढ़ में बुनाई और कोटवारी का काम करते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या उनकी है जिनको की अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल होने पर उनको राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, शिक्षा में उनको अधिकार मिलेंगे, वेंचर कैपिटल फंड से कम ब्याज पर लोन लेकर वो अपने उद्यम भी लगा सकेंगे, उनको केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। और इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित करने में अपना सहयोग दें। Thank you, Minister. The question is that the Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. We shall now take up the clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 1, then enacting formula and the title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Honorable Dr. Virendra Kumar to move. मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed.
Honorable members, under proviso to Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the Council of States, the chairman has permitted the Anusandhan National Research Foundation Bill 2020 listed in today's revised list of business at serial number 6D to be taken up after the consideration and the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023. Dr. Jitendra Singh to move the motion for the consideration of the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023. Madam Chairman, Madam Chairperson, with your kind permission, I rise to move that Anusandhan National Research Foundation Bill 2023, already passed by the Lok Sabha, may be taken up for consideration. Motion moved. There is one amendment by Dr. V. Shivadasan for reference of the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 as passed by Lok Sabha to the Select Committee of the Rajya Sabha. Member absent. Amendment not moved. The motion for consideration of the bill is now open for discussion. I now call upon the members whose name have been received for participation in the discussion. Honorable Sri Sujit Kumar. Thank you, Honorable Vice Chairperson. Ma'am, I'm fortunate and I draw a lot of inspiration because you are in the chair most of the time I get to speak. I, on behalf of my party, Biju Janata Dal, support this bill, ma'am, because it's a very forward-looking bill. In fact, this is a subject which is very close to my heart. I've often spoken in this August House about this during zero hour and during question hour. Now, let me explain, ma'am, what is the rationale behind this bill? Why was this bill brought in? The National Research Foundation Bill 2023 will replace the Science and Engineering Research Board Act of 2008 and subsume the Science and Engineering Research Board, SERB in short, into the National Research Foundation, NRF in short. Now, the SERB Act of 2008 did a great job in laying the foundation of science and engineering in our country. But because of the limited mandate of the Act, the SERB, the board, could not suffice. And also, it did not bring about a decisive change in the research and innovation ecosystem of our country. So the hope is that, ma'am, this bill, NRF 2023, will bring about an integrated and holistic change and in the research innovation ecosystem of our country. It will bring about a perceptible change in the innovation landscape of our country by tapping into universities, higher education, and the private sector. Ma'am, research is a very capital-intensive business. So unless you bring in the private sector to support the research activities and the research ecosystem, I think you cannot have a world-class research. So this is why this is a very forward-looking bill, ma'am. Let me provide some context. Ma'am, today we spend less than 0.7% of our GDP on research. Comparable figures: Israel 4.8, South Korea 4.5, US 3.2 odd, China 2.5 odd. So we are really pathetic when it comes to spending on our research budget. On top of it, private sector spend on research is less than half, close to 40% in our country. Whereas for most of the OECD countries or for most of the top economies, it is anywhere between 70 to 80%. So I think, ma'am, that this bill hopefully will correct this situation. Now, ma'am, Honorable Prime Minister
has articulated his vision that by 2047, at the end of the Amrit Kal, we are now celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. At the end of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Amrit Kal 2047, when we will celebrate 100 years of our independence, we will become a developed nation, from being a developing country to a developed nation. Now, ma'am, we cannot become a developed nation unless we spend on research, unless we focus on technology, because technology will be the key driver of this transformation from being a developing to a developed nation. Secondly, Honorable Prime Minister has also shared his vision of making India a $1 trillion digital economy, which will be roughly 20% of our GDP when we become a $5 trillion economy. Again, without innovation, without R&D, can we become a $1 trillion digital economy? I'm so happy that Honorable Minister IT and Electronics, Ashwin Vaishnav also is here. So, ma'am, give me just 2 more minutes. So, this is why it is very essential that R&D, which is the bedrock of scientific discoveries or technological innovation, is so essential if we are to tackle the challenges of our country, whether it's climate change or food insecurity or other things. Ma'am, just couple of issues which I would like to quickly highlight. One is the independence of the governing board. Though the NRF in the bill itself talks of independence and autonomy of the board, I hope that the government will follow it in letter and spirit. And that, Please conclude, your time just is ma'am, over. just one more Please, minute, please. and that clear and transparent criteria is laid out for selection of the scientists who will be part of the board. Secondly, there will be more focus on allocating sufficient fund to the state universities also, not just the IITs, not just the central universities, but state universities also get fund. And finally, ma'am, social research, social science, humanities is as essential as pure science. And this is why the governing board should consist of eminent social scientists as well. Ma'am, just 30 more seconds. Ma'am, technology will decide the geopolitics of our time. It will decide the destiny of nations. It's the new wealth, ma'am. Technology is the new wealth of nation. This is why the choice we make today as a nation, as to the direction of our research, direction of our technology, will decide whether we become a great power. Ma'am, I'll end by just saying one of my favorite quote. Ma'am, the single most factor which decides the intellectual, social, or economic progress of a nation or the well-being of its citizens is dependent on the creation and acquisition of knowledge. This is why this is a great bill, ma'am, and I support it. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. Thank you. माननीय अयोध्या रमी रेड्डी अल्लाह. For giving me the opportunity to talk on the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023. Madam, this bill is a very transformative one that holds the immense promise for India's future. The establishment of NRF is going to set up and going to give a new direction to reshape our nation's research, innovation, and entrepreneurial landscape. Madam, we have to understand the current status of research and development in our country, and also the innovation and the entrepreneurial landscape. If we have to see the current status, I think we need to do a lot, even though this bill is delayed, but I think very happy that it has come at the right time. For India to be a developed nation, certainly the research and innovation in line with our needs certainly have to be looked at. And today when I see in sectors like infrastructure, in manufacturing, agriculture, and services, all the 4 sectors, if we look at, I think, we have not innovated. We just borrowed certain things and we are trying to move with that. The time has come. Certainly on innovation, India with its own geopolitical situations need to innovate solutions for themselves. A lot of focus need to go into that. Same as research also. Lot of, we have our Sanatan, value system. Taking that into consideration, we have to move on improving our research initiatives, which I'm sure the world will be just looking forward to, and we have that important responsibility. If I have to say on the agriculture side also, there is so many
innovative thoughts that were there at the ground level, and also entrepreneurial skills that are available. This, I think, NRF, I think, under the chairmanship of Honorable Prime Minister, I think it is really going to give a direction. The status, if you look at India, we are just 255 researchers per million people, against the developed countries more than 4,000 to 5,000. The entire machinery that we have to look at, around the research, I think, from the village level to the research, to the universities level, there is a, we don't have the adequate machinery that need to be looked at, and all that must come as a strategic planning from NRF. And then the money also we spend very, very little, just 0.65% of the GDP is spent by India against a global average of 1.8%, and especially the developed nations 2 to 3% and even up to 5%. So what I only want to say, madam, this particular bill is handy in identifying our requirements for this nation on research, development, innovation, and entrepreneurial landscape.